हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार साहब में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के। आज हम एमसीक्यू कवर करेंगे। तो सबसे पहले इजी लेवल एमसीक्यू देखेंगे हम। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट इज सोशल एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, मॉरल ऑब्लिगेशन या इलीगल एग्रीमेंट। तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। और सेकंड क्वेश्चन है विच एक्ट गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया? कंपनीज एक्ट, आईटी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आरबीआई एक्ट। तो विच एक्ट गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया इज सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Something next question है something in return in a contract. Something in return in contract is called capacity, offer, considerations, acceptance. C. Considerations. Minors agreement is C. Void ab initio. Minors agreement is void ab initio. Which of the following is not free consent? Genuine acceptance. Which of the following is not free consent? Genuine acceptance. A contract depend upon future uncertain event is C. Contingent contract. A contract depends upon future uncertain event is C. Contingent contract. Under Sale of Goods Act. Under Sale of Goods Act, buyer beware means B. Caveat emptor. Check is drawn on bank. Which negotiable instrument contains promise to pay? Promissory note. Separate legal entity concept is related to C. Company. Separate legal entity concept is related to company. फिर moderate level MCQ आया है. Which of the following is essential for valid contract? B. Free consent. Which of the following is essential for valid contract is free consent. Next question है an agreement without consideration is C. Generally void. An agreement without consideration is generally void. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेमेडी इज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इसका आंसर हो जाएगा सी. इंजक्शंस. विच रेमेडी इज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इंजक्शन. ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर. डैमेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजक्शन, ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन डिफर्स फ्रॉम वारंटी बिकॉज सी. कंडीशन इज एसेंशियल टर्म. Condition differs from warranty because C. Condition is essential term. Which right is available to unpaid seller? Lien, resale, stoppage in transit, all of these. D. Which right is available to unpaid seller? Lien, resale, stoppage in transit, all of these. D. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ऑफ चेक इज डन फॉर सी. सेफ्टी. क्रॉसिंग ऑफ चेक इज डन फॉर क्रॉसिंग ऑफ चेक इज डन फॉर सेफ्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन ऑब्टेनिंग इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन इज सी. होल्डर इन ड्यू कोर्स. A person obtaining instrument in good faith for or consideration is C. Holder in due course. फिर MOA
stands for Memorandum of Associations. B. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रूल्स ऑफ कंपनी आर कंटेंड इन प्रोस्पेक्ट बैलेंस ऑफ शीट AOA, तो इसका आंसर हो जाएगा AOA. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर CIT एक्ट 2000. डिजिटल सिग्नेचर इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर IT एक्ट 2000. हार्ड लेवल MCQs. क्वेश्चन मैच करेगा फोर्स थ्रेड से, फ्रॉड मैच होगा इंटेंशनल डिसेप्शन से, मिस रिप्रेजेंटेशन मैच होगा फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट इंटेंट से, अनड्यू इन्फ्लुएंस मैच होगा डोमिनेटिंग पोजीशन से. दोबारा देख लो, कोर्सियन किसे मैच होगा, फोर्स थ्रेड से, और फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल डिसेप्शन से, मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट इंटेंट, और अनड्यू इन्फ्लुएंस डोमिनेटिंग पोजीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. एग्रीमेंट विद फ्री कंसेंट जो है वो वैलिड होगा, बाकी जो है वो वैलिड नहीं होंगे. विच डॉक्ट्राइन मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़. बी. नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट. Which doctrine means no one can transfer better title than he himself has. B. Nemo dat quod non habet. Which of the following is non-negotiable instrument under Negotiable Instrument Act? D. Share warrant. Which of the following is not negotiable instrument under Negotiable Instrument Act is D. Share warrant. Which of the following is not negotiable instrument under Negotiable Instrument Act is D. Share warrant. The minimum number of members in public company is C. 7. The minimum number of members in public company is C. 7. Which company can be formed with one member? OPC. Which company can be formed with the one member is C. OPC. The case related to separate legal entity is B. Salman vs. Salman. The case related to separate legal entity is Salman vs. Salman. Which cyber crime involves stealing personal information online is B. Identity theft. Which cyber crime involves stealing personal information online is identity theft. Under Companies Act, AGM means B. Annual General Meeting. Under Companies Act, AGM means B. Annual General Meeting. Which of the following is not feature of company? इसका आंसर हो जाएगा C. Mutual agency. Which of the following is not feature of a company? Mutual agency. Assertion and reason questions. Assertion है minors agreement is void. Reason as minor is not competent to contract. Assertion minors agreement is void. Minors is not component to contract. A. Both A and R are true. R is correct explanation of A. Minors agreement is void. Minors is not competent to contract. तो दोनों राइट स्टेटमेंट्स हैं.
फिर है क्रॉसिंग ऑफ चेक इंक्रीज सेफ्टी। और रीजन है क्रॉस्ड चेक कैनॉट बी इनकैश्ड डायरेक्टली ओवर काउंटर। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्रॉसिंग ऑफ चेक इंक्रीज सेफ्टी। रीजन है क्रॉस्ड चेक कैनॉट बी इनकैश्ड डायरेक्टली ओवर काउंटर। तो दोनों राइट करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOA डिफाइंस स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटीज़ और AO कंटेन्स एक्सटर्नल रूल्स ऑफ कंपनी। तो A ट्रू है और R जो है वो फॉल्स है। फिर केस स्टडी MCQs। अ फोर्स्ड B साइन एग्रीमेंट बाई थ्रेटनिंग हिम दिस कंसेंट इज अफेक्टेड बाई B क्वेश्चन। A forced B to sign agreement to threatening him this consent is affected by B question। नंबर 35 क्वेश्चन है अ सेलर resells goods after buyer failed to pay price seller is exercise B right to resell। PYQ type questions। Which one of the following is not an essential element of valid contract? C unlawful object। Which one of the following is not an essential element of valid contract? C unlawful object। A check is always payable A on demand। A check is always payable on demand। Which clause of MOA defines company's objectives? C object clause। Which clause of MOA defines company objectives? C object clause। The doctrine of caveat emptor the doctrine of caveat emptor means B buyer beware। Which act provides legal recognitions to electronic records? B IT Act 2000। Which act provides legal recognitions to electronic records is B IT Act 2000। फिर मैच फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट। MOA is company constitutions, AOA is internal rules, check is drawn on bank, promissory note promise to pay। वन लीनियर रिविजन्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिएबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर प्रोटेक्ट इज B seller। Digital signatures are related to B cyber law। Holder in due course gets B better title। That's all। Thank you for watching this video। Keep like, share and subscribe this channel। Bye bye।